Hello, good evening, students. So again, we are back with some remaining questions based on some applications of trigonometry. Last time we have seen some questions related to elevation, then what is line of sight, and many more things. So in today's session, first of all, we'll just try to solve few questions based on that angle of elevation, and after that, we'll go for that angle of depression and many more things. Okay. So let's start today's session. But before that, please let me know I'm audible. Okay, thank you. So here we have our first question for today's session is a 1.5-meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. It means that we have to consider the total height is nothing but height of a boy as well as the height of a building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Then find the distance he walked towards the building. Okay. So we'll just try to check what is the actual question. See, here we have a big boy here and height of building which is at something 30-meter tall. The case is that as long as the boy started walking towards the building, then the angle of elevation decreases from 30 degree to 60 degree. Okay, suppose it is the original position, then line of sight is nothing but this. So we know that angle of elevation is nothing but the line of sight and ground. इसके बीच में जो भी कुछ आपको angle मिलेगा, we consider it as a angle of elevation because वो ऊपर दिख रहा है. That's it. Elevation का मतलब क्या है? वो ऊपर दिख रहा है. Correct. So हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ साइड का ये जो कुछ आपको एंगल मिलेगा इट विल बी फॉर 30 डिग्री एंड द सेकंड केस इज दैट as he walks toward the building, suppose ये गया total इसका distance, then at this point, line of sight will be this, then the second line of sight will make a 60 degree angle with the horizontal line, which is nothing but 60 degree. So we have to find the distance he walked towards the building. Getting this one? समझ में आ रहा है? So what will be same? Obviously, height of what will be same for the both places as well as height of building will be same. It means that if suppose this will be our figure that AB is the total building and DC is nothing but height of a wall. So AG is to 6 cell, it will be equal. So we can find out that BG is nothing but 30 minus 1.5. So आपका FE भी बन जाएगा 1.5. This is nothing but our first angle of elevation which is given as a 30 degree and this will be the second one. For both the cases, BG remains same and we have this elevation. So we just have to find this value. See, height of tower is given as a 30 meter. That is AB is nothing but 30 meter. And height of a boy is given as a 1.5 meter. So CD is nothing but 1.5. But CD it's same as EF, it's same as AG, right? Because we are just considering the horizontal line here. So obviously CD, EF and GF will be same values, which is nothing but 1.5. So can you tell me what will be value of BG here? Yes, what will be value of BG here? BG is nothing but AB minus GA, correct? AB minus GA. Then we'll just note it down as a BG is a part of BA, then BG is nothing but AD minus AG, which is given as 30 minus 1.5, which is equals to 28.5 meter. So now we have two right angle angles for which कोई आपको समझ में आ रही है as well as उस side के opposite जो कुछ angle रहेगा वो भी आपको पता है. Okay, so we'll just put it now as FECD is a rectangle. So obviously we can say that GD plus FD, GD is nothing but G plus FD, GF plus FD.
ये कुछ करना है आपको फाइंड करेक्ट। आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू था इट इज नथिंग बट आपको सिर्फ एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी बट वॉल की यूज हियर जो टोटल आपके पास गिवन है उसके लिए 60 डिग्री 30 डिग्री का आप यूज करो and based on it we try to calculate the value of fd but we know that here g fd are linear points so fd is same as gd minus gf तो GD and GF अब फाइंड आउट कैसे करोगे देखो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई फॉर GF हियर so we know that belongs to the right triangle BGF belongs to the right angle triangle BGF so we'll just observe this angle we know the side which is opposite to this तो एंगल आपके पास है अपोजिट साइड आपको पता है तो ऐसा वाला सिंपल रेशियो फाइंड आउट करो दिस विल बी 28.5 करेक्ट एंड एडजेसेंट साइड इज नथिंग बट जीएफ जो आपको करना है फाइंड so we just have to find such ratio which contains opposite side as well as adjacent side. So we can say that in this right angle triangle, opposite upon adjacent is nothing but our tan ratio. So tan elevation is given as a 60 degree. So we can say that tan 60 equals to opposite upon adjacent that is BG upon GL. But we know that tan 60 is nothing but root 3. Tan 60 is nothing but root 3. Hence, root 3 equals to BG का value आपको पता है BG is nothing but 28.5 upon GF जो आपको करना था find out. We'll just write it as it is. Hence, GF equals to 28.5 upon root 3. So after calculating this, you will this one because denominator is nothing but the root 3 so we just rationalize the denominator that is we have to multiply the numerator and denominator by root 3 so we can write it here 28.5 into root 3 upon 3 hence you will get the value of gf as 9.5 times root 3 meters तो जो आपको फाइंड आउट करना था एफ डी इज नथिंग बट जी डी माइनस जीएफ उसमें से हमने जीएफ किया है फाइंड सिमिलर वे से अब आपको चेक करना है टोटल जीडी का वैल्यू क्या रहेगा सो फॉर दैट जीडी अगेन विल ट्राई टू कंसीडर सच राइट एंगल ट्रायंगल्स व्हिच कंटेन्स द साइड जीडी which contains the side GD. So we have a right angle triangle BGD where BG is nothing but opposite side of this angle of elevation which is given as a 30 degree. So for this angle B, opposite side is BG and adjacent side is GD. So again we'll just try to use that tan ratio which is nothing but opposite side upon adjacent. The way we have done for GF, again we are putting it for finding out the value of GD. So we know that if you have the value for opposite upon adjacent, then this is nothing but we have to use the tan ratio. So here angle of elevation is given as tan 30. Hence we consider tan 30 here. Tan 30 equals to OA that is opposite upon adjacent. So 1 upon root 3 equals to BG is nothing but 28 upon 28.5 and GD आपको करना था 5. Hence we can say that GD equals to 28.5 root 3 meter. So आपको जो find out करना था FD इसके लिए आपको अभी क्या you have the value for GD as well as you have the value of GF as well. So we just have to subtract GF from GD. Hence, FD can be written as GD minus GF, which is nothing but 28.5 root 3 minus 9.5 times root 3 meter. So, after considering its subtraction, you will get the value of FD as a 19.3. But we know that root 3 का value आप consider करते हो 1.73. Hence, FD is nothing but 19 into 1.73 which is given as 82.87 meter. So the required value that is the distance he walked. Priyansh, hello, good evening. So the total distance he walked towards the building is nothing but 32.87 meter.
आर यू गेटिंग दिस वन? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्या किया हमने? जो आपको पता था एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको अपोजिट साइड चाहिए थी, आपको एडजेसेंट फाइंड आउट करना था. सो यू जस्ट हैव टू रिकॉल दैट ऐसा कौन सा रेशियो आपके पास है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास है जो अपोजिट साइड एज वेल एज एडजेसेंट दोनों को भी टेल करता है. गेटिंग दिस वन? So here we have our next question. See, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line. अगर आपको ये क्लियर करना है तो देखो, जो भी लास्ट वीक हमने देखे थे वो सबसे इजीएस्ट हमने सारे क्वेश्चंस देखे थे, बिकॉज उस केस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहता था उसकी हाइट आप निग्लिजिबल कंसीडर कर रहे थे. बट दिस इस चैप्टर में जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आगे आपका पूरा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा. आगे हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं. बहुत ही इजी रहता है, सिर्फ उन्होंने क्या दिया है वो समझने की कोशिश करो. एंड आपको जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा ये भी चेक करो. ओके, so here we have our new question. A one tall girl spots a balloon moving with the it in a horizontal line at a height of 88.2 meter from ground. So ये बन गई आपकी height of that girl. This will be height of a balloon from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl is eye. So object जो भी आपका रहता है, जो भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से आई के उस ऑब्जेक्ट के लिए जो आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो उसे ही आप बोलते हो लाइन ऑफ साइट. करेक्ट? सो दिस इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम दैट गॉड. ये जो आपको मिलेगा लाइन ऑफ साइट. So we know that angle between horizontal line and line of sight is nothing but 60 degree. Correct? After some time, angle of elevation reduces to 30 degree. Then find the distance traveled by the balloon during the interval. आप ये assume कर रहे हो कि ये जो भी कुछ height रहेगी balloon की, that height will be same for both the cases. Last जो भी कुछ हमने consider किया था उस केस में वो बॉय जो आपका था, मतलब जो ऑब्जर्वर आपका था वो ऑब्जर्वर इधर उधर हो रहा था. करेक्ट? इस केस में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट था इधर, अब वो हो रहा था मूव. तो इसके लिए जो भी आपको नई लाइन ऑफ साइट मिलेगी, दैट लाइन ऑफ साइट will make a 30 degree angle with the horizontal line. But we have this one similarly लास्ट टाइप का ही क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट केस में आपको वो बॉल कितना मूव हो रहा है ये फाइंड आउट करना था. इस केस में आपको बलून कितना मूव हो रहा है, मतलब जो भी कुछ टोटल डिस्टेंस रहेगा that by that object ये आपको करना है फाउंड. But for the both cases you have that opposite value. एंड जो आपको चेक करना है वो आपको कैसे मिल रहा था, देखो एडजेसेंट का ही केस था. सो हाइट ऑफ अ बलून इज गिवन एज 88.2. हाइट ऑफ द गर्ल व्हिच इज नथिंग बट PE is given as a 1.2 meter. So we know that PE is same as QA is same as RC, which is nothing but 1.2 meter. The way we have done for the last question, हम same ही यहाँ पे use कर रहे हैं. So it is nothing but this BA is made up of BQ and QA. So we can say that BQ is nothing but BA minus QA, that is 88.2 minus 1.2. Hence you will get BQ as a 87 meter. Getting this one? Similar. We have find the value of QR, right? Because we know that if you will consider the quadrilateral BDRQ, it will be like that, right? Hence, BQ equals to 87. So PQ belongs to right angle triangle. In the right angle triangle BPQ, you can see that ये जो angle P आपको दिखाई दे रहा था, angle P के जो opposite side है, which is nothing but PQ, उसका पहले से आपको पता है क्या रहेगा. We just have to check for that PQ because we know that finally we have to find the value of QR, but QR is nothing but PR minus PQ. Hence, first of all, we are finding the value of PQ here.
So in this right angle triangle, आपको opposite side मिलती है, आपको adjacent side find out करनी है, and we know that the trigonometric ratio which involves these is nothing but tan. So tan 60 because ये जो PB आपको लाइन मिल रही थी, इसके लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया था 60 डिग्री. Hence tan 60 can be written as opposite upon adjacent, that is 87 upon PQ. But we know that tan 60 is nothing but root 3. Q आपको कुछ मिला था 87 upon PQ. Hence PQ can be written as 87 upon root 3, but denominator पे root 3 का टर्म आपको नहीं चाहिए. So for that we'll just rationalize the denominator. Hence we can say that PQ is nothing but 87 times root 3 upon 3, which is equals to 29 times root 3. क्लियर हो रहा है? जिस वे से आपने ये PQ फाइंड आउट किया है, सेम वे से अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? देखो PR फाइंड आउट करना है. गेटिंग दिस वन बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है पूरा? Okay, so now we'll just consider that PR. So PR contain करेगा ऐसे आपके पास right angle triangle कौन सा है? देखो, we can see that, we can observe that PR belongs to the right angle triangle PRD. Hence, in the triangle PRD, opposite side is nothing but DR, adjacent side is nothing but PR. So the ratio of opposite side upon adjacent, which is nothing but tan, is given as tan 30 equals to DR upon PR. But we know that tan 30 is nothing but 1 upon root 3. Hence we can write 1 upon root 3 equals to DR is nothing but 87 upon PR. Hence PR equals to 87 times root 3. Now just use that जो आपको find out करना था, QR is nothing but PR minus PQ. Hence QR equals to PR just आपको मिला था 87 root 3 and PQ हमने first part में find out किया था, which is nothing but 29 times root 3. So QR equals to 58 times root 3. What you have to do? Just put root 3 as a 1.73. You will get the value of QR here. Are you getting this one? Hence, we can say that distance traveled by the balloon is that 0.34 meter. Are you getting this one? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? Should we go on for the next question then? हम क्या कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले गिवन जो आपके पास पार्ट है वो कुछ आप रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन which is based on that angle of difference. See, from the top of a lighthouse, an observer looks at a sheet and finds the angle of depression to be 60 degree. ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? So it is a very important question. Just go through it. And जैसे मैंने आपको बोला लास्ट टाइम तक जो आप देख रहे थे उस केस में क्या था, अगर ऑब्जर्वर रहता है यहाँ तो लाइन ऑफ साइट आपको ऊपर मिल रही थी, इसके लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा था. फॉर दिस क्वेश्चन आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा बिकॉज ऑब्जर्वर रहेगा यहाँ, तो फिर वो देख रहा है. गेटिंग दिस वन? समझ में आ रहा है? So see, from the top of a lighthouse, an observer looks at a ship. यहाँ पर ship है, okay, and finds the angle of depression to be 60 degree. If the height of a lighthouse is 90 meter, then find how far is that ship from the lighthouse. मतलब again आपको क्या मिल रहा था? देखो, ये कुछ आपको पता है, ये आपको करना है find. But before that, tell me what will be that angle of depression. यहाँ पे रहेगा ऑब्जर्वर. This is nothing but a horizontal line. So angle of depression is nothing but ऑब्जर्वर जहाँ पे है वहां से वो नीचे दिख, राइट? सो ये जो आपको मिलता है, आपको सिर्फ
आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा वाला एंगल आपको कंसीडर करना है. दैट लाइन ऑफ साइड इज मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. बट अगर आप कंसीडर करते हो वहां पे कुछ ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, वी नो दैट द ऑब्वियसली जो भी आपको टॉवर मिल रहा था इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस. सो अगर ये रहता है 90 डिग्री तो ये भी आप 90 डिग्री कंसीडर करोगे. फाइंड आउट करना है आपको दैट डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द लैंडमार्क्स. ओके, सो ये सिर्फ आप करोगे चेक. दिस इज नथिंग बट, बहुत बार किया होगा, वी नो दैट अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है देन ऑब्वियसली BC is parallel to AE, so AE parallel to BC, and here AC will work as a transversal. So this is nothing but alternate angles. अगर एंगल्स रहते तो अल्टरनेट एंगल्स का हमेशा मेजर आपको सेम रहता है, ये आपको पता है. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो हमारे इसी चैनल पे नाइन्थ के लिए ये लाइन्स एंड एंगल हमने पूरा किया है. अगर आपको चाहो तो आप वो पूरा रिवाइज कर सकते हो. बट ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट हम बहुत बार यूज करने वाले हैं. जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस आता है तो बहुत बार ये यूज करना पड़ता है. ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, so we know that AE parallel to BC and AC will work as a transversal for it. So ये जो आपको एंगल्स मिलते हैं अल्टरनेट एंगल, जो आपको यूजुअली Z या फिर उल्टा पुल्टा Z जैसे दिखाई देता है, ये एंगल हमेशा इक्वल मिलेंगे. सो नाउ यू हैव दैट मेजर ऑफ एंगल C. मेजर ऑफ एंगल C के अपोजिट जो भी आपका साइड रहेगा उसकी वैल्यू आपको पता है, एंड एडजेसेंट वैल्यू सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है. So the way we have done for the last two questions, same फिर से आपका रहेगा क्वेश्चन. करेक्ट, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? बिकॉज जो भी कुछ आपको डील करना था वो एंगल के अपोजिट साइड से, एंगल के एडजेसेंट साइड से ही करना है. And we know that the trigonometric ratio which involves these two values, that is opposite upon adjacent, is nothing but tan ratio. Okay, we have that AB equals to 90 and C represents the position of a ship. तो फिर अगर ये कुछ आपको मिलता है then EAC is a 60 degree. So we can say that EAC is same as ACB, which is nothing but alternate angle. अगर आपको सिर्फ एल्जेब्रिक याद रखनी है तो मैंने आपको ये बोला था कि इधर आपको Z दिखाई देगा या फिर उल्टा पुल्टा Z दिखाई देगा. So we know that EAC is same as ACB. EAC is same as ACB, which is nothing but alternate angle. Hence, for this right angle triangle ABC, measure of angle C will be 60 degree. So we have the value of opposite side of this angle. So opposite side is nothing but AB. आपको adjacent side मिल रही है यहाँ पे BC, and जो आपको करना है फाइंड. सो अगेन ऐसा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढ दो जहां पे आपको OA का केस मिल रहा है. सो OA is nothing but, we can say here, tan of this degree, that is tan 60 equals to opposite upon adjacent. But we know that tan 60 is nothing but root 3. Hence root 3 equals to AB आपको कुछ मिल रहा था, AB भी था, करेक्ट. AB is nothing but 90 and BC आपको करना है. Hence BC equals to 90 upon root 3, but denominator में कुछ आपको रूट मिल रहा है. सो आप क्या करोगे? विल जस्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज आप ऊपर नीचे रूट 3 से करोगे मल्टीप्लाई. यस प्रियांश, यस द सेम थिंग. इसके लिए तो हम इतने क्वेश्चंस देख रहे हैं. हर एक टाइप आपका सेम है. यूजुअली आपको tan का यूज करना पड़ता है, बट कैसे करना देखो. So BC equals to 30 times root 3. But we know the value of root 3, which is nothing but 1.76. So after calculating this, you will get the distance of ship and lighthouse. So this is your answer. If you want to take a screenshot, just go through it. It is a very easy chapter. सिर्फ क्या करना है, कौन सा रेशियो आपको यूज करनी है समझना चाहिए. एंड ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग दैट जो लास्ट चैप्टर में हमने किया था दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का एंड वो पूरा टेबल वाला फॉर्म, ये आपको अच्छे से याद रखना है. ओके, हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन
Again same type का question है, but now we have two shifts here. See, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको क्या करना है ये क्लिक हो जाता है. ओके, सी एंड ऑब्जर्व from a top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. Are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly the other, if one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, then find the distance between two ships. Fine. सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको, जब भी डिप्रेशन कंसीडर करना है तो ऐसा नीचे आपको फाइंड आउट करना होता है, बट जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वो हम राइट एंगल ट्रायंगल में कंसीडर करें. करेक्ट, मतलब ये जो 30 था, ये 45 था, इससे आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी दैट एंगल BDA एंड BCA. सेम दिस उल्टा पुल्टा z मिल रहा है which is nothing but alternate angle, and alternate angles are always equal. अल्टरनेट एंगल क्यों मिल रहा है आपको? बिकॉज ऑब्वियसली दोनों भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगे आपको AC एंड BX. सो BX एंड AC आर पैरेलल, सो वी कैन कंसीडर BC एंड BD वर्क्स एज अ ट्रांसवर्सल बियर. आई थिंक आप कर सकते हो, चेक करो. राइट, सो आपको यहाँ पे आना है सबसे पहले. सी XBDA, ये कोशिश करो आप. If you will get that measure of angle XBD as a 45 degree, उल्टा पुल्टा z समझ में आ रहा है. अगर ये 45 रहता है तो ये भी आपका मतलब BDA भी रहेगा 45. सिमिलरली ये आपको मिलेगा 30 डिग्री. So now you have angles. एंगल के लिए जो अपोजिट साइड रहेगा फॉर बोथ द एंगल्स, एंगल के लिए अपोजिट साइड आपके पास है. जो भी कुछ फाइंड आउट करना है वो अगेन आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में करना है, मतलब tan का केस आपको यूज करना है. करेक्ट. सी this is the height of the lighthouse which is given at 75 meter. AD is a distance of one ship from the foot of lighthouse. So ये रहेगा फर्स्ट शिप, ये रहेगा आपका सेकंड शिप. जो भी कुछ है आपको फाइंड आउट करना है DC का. So suppose it is X. Then what you can say if you are talking about a right angle triangle BAD, in right angle BAD, D is nothing but 45. So D के लिए अपोजिट साइड आपको मिल रहा था AB, बट जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है AD फाइंड करना. करेक्ट, बिकॉज आपको DC फाइंड आउट करना है. दैट वी जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X, एंड दैट X इज नथिंग बट AC minus AD. So उसके लिए हम AD फाइंड करेंगे. Opposite adjacent is nothing but tan. So we can say that tan of 45 degree is equal to opposite upon adjacent. That is tan 45 is AB upon AD. But we know that tan 45 is nothing but 1. Hence you can say that 1 equals to AB is given as 75. So 75 upon AD. Therefore AD equals to 75. AB equals to 70. तो ये तो हो गया आपका AD का. सिमिलरली आपको अभी फाइंड आउट क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. करेक्ट. सो फॉर AC अगेन चेक करो, इसके लिए अपोजिट साइड आपके पास है, AC आपको करना है फाइंड. सो यू जस्ट हैव टू चेक द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हिच इन्वॉल्व्स द टर्म अपोजिट एंड एडजेसेंट. Hence, ratio of opposite side and adjacent side is nothing but tan 30. So we can say that tan 30 equals to AB upon AC. But tan 30 is nothing but 1 upon root 3. AB आपको कुछ भी 75 meter upon AC is nothing but AD plus DC. So I can write it as the X plus 75. Hence, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करते हो, then you will get x plus 75 as 75 times root 3. Hence, x equals to 75 root 3 minus 75. So x equals to, we'll just put the value of root 3 as a 1.73. So you will get that value of x as
75 into 0.73. After calculating this, you will get the value of x as a 54.75. This will be the required answer. That is, distance between two shifts is 54.75. Are you getting this one? If you want to take a screenshot, you can take it. Yes, here it is. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इजीली आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स फ्रॉम दिस सम एप्लीकेशंस ऑफ आज ही के लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट तो अगर अच्छे से ध्यान देते हो तो आपका ये पूरा लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट देन नेक्स्ट वीक में हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं बट इफ यू वांट अनदर क्वेश्चन then please let me know in the chat box. Okay. Again we have one more question. जो भी आप कर रहे थे लास्ट टाइम हमने क्या किया ऑब्जर्वर सेम रहेगा तो उस केस में आप कंसीडर करो कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके टू मिलते हैं फॉर दैट. So now from the top of a 7 meter high building, angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree. मतलब angle of elevation दिया है आपको and the angle of depression of its foot is 45. देखो मतलब सेम क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की भी करना है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहेगा ये भी आपको चेक करना है करेक्ट. So the depression is then we have to find the height of a tower. We know height of a building is nothing but 7 meter. Observer will be at the top of the building. So it is nothing but a horizontal line. एंगल ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट ऑब्जर्वर से जो भी आपको टॉप ऑफ केबल टावर मिलता है जो ये आपका लाइन ऑफ साइट मिलेगा दैट लाइन ऑफ साइट विल मेक angle of 60 degree with this horizontal line and angle of depression to the foot of the cable tower. So ये बन जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट. इस केस में को मिलेगा 45 डिग्री. Then we have to determine the height of the tower. ये पूरा क्या रहेगा आपको करना है फाइंड. सो हम सबसे पहले सिर्फ नेम्स दे देते हैं A B C D and E. We know that AB is nothing but that building and CD is nothing but height that tower. So we have to find the value of CD, but which can be written as a h. We know that AB is 7 मीटर. अगर AB आपका रहता है 7 मीटर तो ऑब्वियसली ED का भी वैल्यू आपको क्या मिलेगा 7 ही मिलेगा बिकॉज वी कैन से दैट ABDE is a rectangle. So opposite sides आपके रहते हैं equal. So we can say that ED will be 7 मीटर. So now just observe CD. CD is nothing but h. But उसके आपका CD का टोटल वैल्यू होगा आपका 7 मीटर बट ED is given sorry CD आपका रहेगा h मीटर but ED is given as a 7 मीटर. Hence CE will be 7 आपको करना है सिर्फ से माइनस करेक्ट. We can say that CE is nothing but h minus 7 मीटर. तो कुछ इसके बारे में आपको अभी डिस्कस करना है. देखते हैं क्या कर सकते हैं हम. For the right angle triangle AED, you have this value as a 45 degree and you have opposite side of. So A के लिए for this right angle triangle AED, EAD का अपोजिट साइड आपके पास है. इसके लिए एडजेसेंट साइड आपका रहेगा AE. So again we have to consider such trigonometric ratio which involve opposite side upon adjacent, which is nothing but tan. So we can say that here tan 45 is nothing but ED upon AE and tan 45 बहुत ही easy value है which is nothing but 1. So we can say that AE and ED will be same. अगर ED रहता है 7 मीटर then AE will be 7 मीटर again. AE will be 7 मीटर again. ओके तो ये जो आपने AE फाइंड आउट किया अगेन जाओ ऊपर वाले इसमें दैट इज AEC के लिए.
सो फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ए मिल रहा था, दैट इज CAE is given as a 60 degree. So for that 60 degree you have the value of opposite side, adjacent side पहले से आपको पता है, opposite side आपको फाइंड आउट करना है. So again we have to use tan वाला केस. आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपका पूरा. tan 60 क्या रहता है, √3. So √3 is nothing but opposite side is given as a h minus 7 and AE is given as a 7 meter. So considering the cross multiplication, what we will get, 7 times √3 equals to h minus 7. So ये minus 7 जाएगा hs पे. You will get the value of h as 7 times √3 plus 1. But √3 is nothing but 1.73. Hence, h will be 7 into 1.73 plus 1. That is, after calculating this, you will get h as the 19.11. जो आपको करना है, fine. H is nothing but height of a cable. Correct? If you want to take a screenshot, just go through it. So, you will get that height of a cable tower is nothing but 19.1. That's it. Are you getting this one? Clear हो रही है आपको? On for the next question then. Fine. So our next question will be something like this. Yes. Here we have our next question. A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of tower with a uniform speed. अगर आपका ये थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप का क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत कुछ आपको करना पड़ता है, बट स्टिल यू कैन रियली सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर आपको क्या करना है ये ठीक होता है, लाइन ऑफ साइट क्या रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कंसीडर करना है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेना है, अगर ये आपको समझ सकता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे. ओके, सी आपको क्या पता है, ये कुछ था आपका मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डिप्रेशन, दैट इज ई, एंड ये पॉइंट आपको मिलेगा 30 डिग्री. After 6 seconds, after 6 seconds, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. मतलब अब तक आप क्या कर रहे थे, कोई एक साइड आपको पता होती है उसका यूज करके, यूजुअली हम tan का यूज करके एंड बाकी सब आप कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग वैल्यू ऑफ सम साइड, अभी आपको कुछ ये दिया गया, after 6 seconds the angle of depression of the car is found to be 60 degree. मतलब आपको टाइम दिया है यहाँ, राइट? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. पता क्या था आपको, ये जो कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रही है, इट इज द यूनिफॉर्म स्पीड, राइट? सो इसके लिए आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा 60 डिग्री. आपको फाइंड आउट करना था ये जो कार थी यहाँ तक, मतलब फुट ऑफ टावर तक जाने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा. सो जस्ट ये ऑब्जर्व करो, जो हमने लास्ट टाइम किया था, अल्टरनेट एंगल्स आपको मिल जाएंगे, ऑब्वियसली बीई एंड एडी विल बी पैरेलल, सो वी कैन से दैट बीडी इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल. तो अगर बीईबी डी आपका रहता है 30 डिग्री, देन डेफिनेटली बीडी ए विल बी 30 डिग्री. सेम फॉर दिस. समझ में आ रहा है, मतलब ये रहेगा आपका 30 डिग्री का, एंड वी कैन से दैट बीसीए विल बी ऑफ 60 डिग्री. The reason is nothing but alternate angle. आपको फाइंड आउट करना है टोटल कितना टाइम लगेगा, बट जो भी आप ये सब कर सकते हो, यू विल गेट लेंथ ऑफ सीडी, लेंथ ऑफ एबी एंड मेनी मोर थिंग्स. तो अगर डिस्टेंस के लिए आपको जाना है एंड टाइम आपको दिया था, वी नो दैट टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप का क्वेश्चन सिर्फ इसी की वजह से होता है आपको, बिकॉज कुछ आपको
टाइम का भी यूज करना पड़ेगा। सी हाइट ऑफ अ टावर इज गिवन एज h, ऑब्वियसली दोनों केसेस में वो सेम रहने वाला है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ अ टावर टू द कार एट c is y meter and suppose cd is nothing but x meter। आपके पास सिर्फ एंगल्स थे, एंगल को छोड़ के कुछ भी नहीं दिया था। इसके पहले वाले जो भी कुछ आप क्वेश्चन देख रहे थे, इट माइट बी स्क्यू फॉर 3 मार्क 2 मार्क। ये जो आपका रहेगा सिमिलर का भी यूज करना पड़ता है इधर, करेक्ट। सो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड बी एक्स, बिकॉज आपको क्या मिलना था, अगर आपकी कार रहती है पॉइंट डी, डी टू सी जाने के लिए 6 सेकेंड्स लगता है, तो सी टू ए जाने के लिए कितने सेकेंड्स लगेंगे, ये आपको करना था फाइंड। बट वी नो दैट फॉर दिस बी ए सी आपको क्या मिल रहा था, देखो बी ए सी के लिए फॉर दैट 60 डिग्री अपोजिट साइड इज नथिंग बट AP and adjacent side is nothing but AC. So we can say that tan 60 equals to AB upon AC, but tan 60 is nothing but root 3. So we can say that root 3 equals to H upon Y. That is H will be root 3Y. ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली A B D ट्रायंगल कंसीडर करो, इस केस में क्या आपका AB का वैल्यू सेम ही रहने वाला है, करेक्ट, जो हम H लिखेंगे। So in the right angle triangle ABD, we can say that for this measure of angle B, opposite side आपको पता है, and जो आप adjacent side consider करोगे, adjacent side is nothing but AD, जो आप लिख सकते हो AC plus CD, correct? So in this triangle BAD, tan 30 can be written as AB upon AD, that is 1 upon root 3 equals to AB upon AD. But AB is nothing but H, AD is nothing but X plus Y. So after considering the cross multiplication, you will get X plus Y equals to H times root 3. But we know that X plus Y is nothing but H का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन में मिला था। फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिला था H is nothing but root 3 times Y. So root 3 times Y into root 3. So you will get X plus Y as a 3 times Y. Hence X will be twice of Y. ये क्लियर हो रहा था। फर्स्ट से आपको H की वैल्यू मिली थी, सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड राइट ट्रायंगल कंसीडर किया एंड वहां से आपको X एंड 2Y मिला। ये आपको क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चाहे आप एबीसी कंसीडर करो या फिर एबीडी, दोनों के लिए भी सिर्फ आपके पास एंगल की वैल्यू है, इस साइड के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, सपोज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 6 seconds is d to c जा रहा था, which is nothing but x मीटर। So we can say that speed of the car is nothing but distance of distance upon time, and distance आप consider कर रहे हो x मीटर का, टाइम आपको पहले से पता थे, सेकेंड्स में अगर दिया है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस आपको मीटर में कंसीडर करना है, राइट। सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ द कार इज नथिंग बट x अपॉन 6, बट आपको अभी क्या मिल रहा था, x is nothing but twice y upon 6. So we can say that speed of the car will be y upon 3. हमने क्या किया, डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट किया, तो अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का आप यूज करें। तो सीडी के लिए तो आपको स्पीड मिलता है, ऑब्वियसली सीए जाने के लिए भी सेम स्पीड रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है दैट कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब बी टू सी जाने के लिए जो स्पीड रहेगा ऑब्वियसली वही स्पीड आपको सी टू ए के लिए कंसीडर करना है। समझ में आ रहा है। अब सी टू ले जाने के लिए अगेन आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास अभी डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, आपको सिर्फ टाइम फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सी सो वी कैन से दैट टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट सी इज नथिंग बट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट ये डिस्टेंस आपने कंसीडर किया था y मीटर का, एंड स्पीड था आपके पास y अपॉन 3। बट वी नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगेन जाएगा न्यूमरेटर पे, सो वी कैन राइट दिस एज
y into 3 upon y will get cancelled, and you will get the value as a 3 seconds. That is time taken by car to reach foot of tower from this point is 3 seconds. क्लियर हो गया क्या? देखो हमने क्या सॉल्व किया था, जितने भी क्वेश्चन अब तक आपने किए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ये जो सेकंड आपको मिलता है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया गया था कुछ सेकेंड वाला, एंड क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन था दैट विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कुछ आपको यूज करना पड़ेगा स्पीड से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। जो डिस्टेंस आपको पता नहीं था वो आपने कुछ x एंड y कंसीडर किया है। यूजिंग दिस आप h चेक करोगे, बिकॉज फॉर बोथ ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल h इज अ कॉमन बिटवीन इट। तो h का यूज करके जो भी कुछ आप फॉर्म कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आपने किया। यूजिंग दैट h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा आपको, अगेन आगे जाके x इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा, तो ये आपने किया है फाइन। So your final answer will be that time taken by the car to reach the foot of tower from this point is 3 seconds. डाउट है तो पूछो, अगर चाहिए तो नेक्स्ट पिछले वाला स्लाइड में ओपन करेंगे। आर यू गेटिंग दिस वन? अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में शेयर करो। हाँ या ना, तो कितना वो। ओके, गेटिंग दिस वन? Should we go on for the next question? इजी इजी क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे। ये देखो, a man on cliff observe a boat at an angle of depression 30 degree, which is sailing toward the point of a shore immediately next it. 3 minutes later, मतलब अगेन ये क्वेश्चन आपका कैसा है? देखो कुछ मिनट के बारे में, मतलब आपको टाइम दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन है, आपको वो सिर्फ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का यूज करना है, which is sailing towards the point, the shore immediately with it. 3 minutes later, the angle of depression of a boat is found to be 60 degree. मतलब पहले वाला ये था आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन था कुछ 60 डिग्री का। आफ्टर 6 मिनट्स क्या मिलेगा? ये 6 मिनट जो रहेगा, suppose that both will be here, then for this point आपको angle of depression मिल रहा था कुछ 60 डिग्री का। Then assuming that the pole sails at uniform speed, determine how much time it will take to reach the floor. जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सिमिलर वे से आपको ये करना है सॉल्व। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम से आपको ये सॉल्व करना। ट्राई करो, पूरा सेम है। अगर ये 30 डिग्री का है देन ऑब्वियसली डी भी आपको 30 डिग्री का मिलेगा। अगर ई ए सी आपको 60 मिलता है देन ए सी डी भी आपको 60 मिलेगा। We just have to use the formula for time is equal to distance upon speed. So for this obviously a b का वैल्यू दोनों केसेस के लिए आपको सेम मिलेगा। ये है इनिशियल पोजीशन, दिस विल बी योर फाइनल पोजीशन। दिया क्या था आपको? डी टू सी आने के लिए बोर्ड को लग रहे हैं कुछ 6 मिनट्स। सी ये आपको इक्वल मिलेंगे। द रीजन इज नथिंग बट अल्टरनेट एंगल्स, जो हमने लास्ट केस में भी किया है। करेक्ट। नाउ द शिप टुक 3 minutes, yes, not 6, 3 minutes. The ship took 3 minutes from D to C. So we know that time is nothing but distance upon speed. तो डिस्टेंस आपको जो फाइनली फाइंड आउट करना है, आपको चाहिए था C टू B जाने के लिए बोट को कितना टाइम लगेगा। सो फॉर दैट आप क्या करो, सबसे पहले डिस्टेंस निकालो, जो भी यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बोल रहे हो उससे आप डिवाइड कर लो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड टाइम। ओके, स्टार्ट करें। The uniform speed Vx, so we can say that अगर D to C जाने के लिए 3 minutes लग रहे हैं and we know that uniform speed आप x consider कर रहे थे, so distance is nothing but time into speed, so we can say that
The distance from C to D is 3 times x. Distance from C to D is 3x units. So now it's about this. In the right angle triangle ABC, C आपको मिल रहा था 60 degree. So opposite will be AB here and adjacent side is nothing but BC. So opposite upon adjacent का आपको करना है use, that is tan 60 equals to AB upon BC. So tan 60 is nothing but root 3. Root 3 equals to AB का वैल्यू आपको पता नहीं है, ना कि आपको BC का वैल्यू पता है, right? But you can write that AB is nothing but root 3 times BC. सिर्फ ये यूज करके आप root 3 times BC ले रहे हो. Because अगर आपको ये यूज करना है तो डिस्टेंस चाहिए. डिस्टेंस आपको मिल रहा था BC. So हमने क्या किया? टर्म्स ऑफ B आप सिर्फ कर रहे हो फाइन. तो जो आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किया था, सिमिलरली नाउ जस्ट कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल ABD फॉर व्हिच अपोजिट साइड मिलेगा आपको AB एंड BD विल बी adjacent. Correct? So in this ABD, tan 30 can be written as opposite is AB and BD आप कैसे लिख सकते हो? BD is nothing but BC plus CD. Obviously, we know that tan 30 is nothing but 1 upon root 3 equals to AB upon BD. But BD के लिए आगे ना क्या पुट कर सकते हो? देखो AB equals to BD upon root 3. But first जो आप क्वेश्चन मिल रहा था that considering this right angle triangle ABC, we written the value of AB in terms of BC. So just AB को कर दो आप plus. So root 3 times BC equals to BD upon 3. That is, considering the cross multiplication, you will get 3 times of BC equals to BD. 3 times of BC equals to BD. Now we have one more thing. BD is nothing but BC plus CD. BD is nothing but BC plus CD and CD कुछ आपको मिल रहा था 3 times x. So we can say that ये वाला BC जाएगा इस साइड पे twice C is equal to CD. Hence BC का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो? BC is nothing but CD upon 2. But again CD का आपका वैल्यू क्या था? CD आपको कुछ मिल रहा था जो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था. किस वजह से किया? ये इसके लिए यूनिफॉर्म स्पीड आप कंसीडर कर रहे हो तो एज x एंड टाइम आपको गिवन था 3 मिनट्स का. सो डिस्टेंस इज नथिंग बट टाइम इनटू स्पीड का यूज करके आपको ये 3x मिला. सो BC is nothing but CD upon 2, but we can replace CD as a 3 times x. Hence BC will be 1.5x units. अब जो आपको फाइंड आउट करना है फाइनल फॉर्मूला उसका यूज करो. टाइम इक्वल्स टू BC upon x, that is BC is nothing but 1.5 times x upon x. X will get cancelled and you will get the value of a time as a 1.5 minute. The time taken to reach the shore is 1.5 minutes. Getting this one? If you have any doubt, then you can ask that. See, for these types of question, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लर्न करोगे, आपको आइडिया है कि आपको एक्चुअल में करना है फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, अगेन ये क्वेश्चन हम सिर्फ डिस्कस करके आप खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 seconds. मतलब ये जाएगा कुछ इस साइड पे. आफ्टर 30 सेकेंड ये कुछ आपको इस वे से मिला था. अगेन ये आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का केस है. इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ, मतलब ये हाइट आपको गिवन है, कांस्टेंट हाइट ऑफ 3603 मीटर, देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड. इजीली कर सकते हो. देखो अभी आपको ये कुछ हाइट मिल रहा था, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का अगर कोई भी एक साइड आपके पास रहता है एंड वो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, देन इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हो.
सो दैट जो रिक्वायर्ड साइड रहेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वो आपको मिल जाएगा. एंड आफ्टर दैट यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आपको जो भी कुछ चाहिए आप फाइंड आउट कर सकते हो. गेटिंग दिस? The height is thing like this. So you have to find the speed. But अगर speed find out कर then speed is nothing but distance upon time. अगर time आपको अभी मिल रहा था distance से करना है. See, check. P and Q be the first and second position of a jet plane. तो उसके लिए for that A आपको for that P आपको angle of elevation मिलेगा कुछ PAS and for this Q angle of elevation आपका रहेगा QAR, right? So we can say that for the right angle this क्या मिलता है चेक करो. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का आपको यूज करना. वो भी टाइम 30 सेकेंड आपको पहले से गिवन है तो सिर्फ डिस्टेंस यूज करना था. मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या है प्लेन की एंड लास्ट पोजीशन क्या है ये सिर्फ आपको करना है फाइंड. ओके, समझ में आ रहा है इतना? गेटिंग दिस वन? सी डिस्टेंस इज नथिंग बट p to q. बट p to q अगर आपको फाइंड आउट करना है p to q सेम एज sr तो इसमें से जो आपको कहता है वो आप करोगे सॉल्व. Hence, either PQ find out करो या फिर SR find out करो. But we know that आपके पास ये right angle triangle है जिसके लिए angle of elevation आपको पता है and opposite side पता है, correct? QR या फिर PS इसका आप करोगे use. See, अगर आपको SR find out करना है then we use SR is nothing but AR minus AS. So for this S we'll just talk about the right angle triangle APS where angle of A measure of A is given as 60 degree and आपके पास opposite side है ना. So opposite side is nothing but PS, adjacent side will be S. So we can say that tan 60 equals to PS upon AS. But tan 60 is nothing but root 3. So root 3 equals to 36. Then root 3 upon AS. So you will get value of AS as a root 3 will get cancelled and कुछ AS आपको मिलेगा 3600 मीटर. जैसे आपने AS का वैल्यू फाइंड आउट किया है सिमिलर वे से आपको अभी AR का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड फॉर दैट केस आप कंसीडर करोगे राइट एंगल ट्रायंगल ARQ. अब AR क्यूब में भी देखो अगेन आपके पास ये मेजर ऑफ एंगल क्यू ए आर था जो कुछ 30 डिग्री गिवन है उसके लिए अपोजिट साइड आपको मिल गई है एंड एडजेसेंट आपको करना था. So again you will use of that tan 30 equals to opposite upon adjacent that is QR upon AR but tan 30 is nothing but 1 upon root 3. Hence 1 upon root 3 equals to QR is given as 3600 times root 3 upon AR but AR के लिए आप क्या पुट कर सकते हो देखो nothing but this. So considering the cross multiplication, you will get AR equals to 3600 into 3 which is nothing but 10,800. तो अभी आपके पास AR का वैल्यू है AS का वैल्यू है आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है SR so that you will get the distance. अगर एक बार डिस्टेंस मिल जाएगा टाइम तो पहले से आपके पास गिवन है आप इजीली स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो. So SR is nothing but 10,800 minus 1,600. So it will be 7,200. So we know that PQRS is a rectangle, hence opposite sides will be of equal measure. अगर SR का वैल्यू आपका रहता है 7,200, then obviously PQ will be this. But PQ is nothing but the distance traveled by the jet plane in 30 seconds. In 30 seconds, correct? Hence, speed is nothing but distance upon time. Distance आपको पता है, distance is nothing but PQ, time आपको given. So PQ is nothing but 7,200 upon 30, but मीटर में दिया था, correct? डिस्टेंस जो आपके पास है, it is in terms of मीटर and ये सेकंड के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? चेक करो. फाइंड द स्पीड ऑफ दिस प्लेन आपको करना था फाइंड. सो सबसे पहले हमने मीटर इन टर्म्स ऑफ
किलोमीटर कंसिडर किया एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ आर कंसिडर किया. सो विच कैन बी रिटन एज, अगर आप ये पूरा करते हो कैलकुलेशंस, then you will get the speed as a 72 into 12, which is nothing but 864 किलोमीटर पर आवर. ये जो आपने फाइंड आउट किया था स्पीड, इट इज फॉर किलोमीटर पर आवर. इसके लिए हमने मीटर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर कंसीडर किया, सेकेंड्स इन टर्म्स ऑफ आर कंसीडर किया. आई होप यू विल गेट इट. जस्ट गो थ्रू द कैलकुलेशन एंड क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. If you have any doubt, then you can ask. It is a very much easy chapter. Just आपको क्या करना है, कैसे यूज करना है, कौन कौन से वेज चेक करने हैं, ये सिर्फ क्लिक. एंड फॉर दैट गिवन पार्ट क्या है, देखो कैसे फाइंड आउट करना है, ये कंसीडर करना. ओके, सो विल कंसीडर द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर. एंड जैसे मैंने आपको बोला है, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट एंड आफ्टर दैट हम बाकी के सारे चैप्टर्स देखेंगे. इफ यू हैव अ न्यू चैप्टर, आपको आपके जो भी कुछ सजेशंस रहेंगे, यू कैन इन द चैट बॉक्स. ओके, फाइन. सो द लास्ट question. Two poles of height 18 meters and 7 meters are erected on the ground. A wire of length 22 meters is tied to the top of the poles. Then find the angle made by the wire with the horizontal. मतलब hello रानी, hello. आपको कोई अगर नया चैप्टर चाहिए, then please let me know in the chat box. Otherwise, for the next चैप्टर वी आर स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी. वो भी बहुत ही इजी चैप्टर है, बट आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, मतलब एक्चुअल में क्या करना है क्लियर होना चाहिए. सो वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे. बट फॉर नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टू पोल्स. अब देखो इस केस में आपको एंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है. जो भी कुछ आपको दिया गया था वो लेंथ आपको पता थे, मतलब लेंथ ऑफ सेगमेंट अगर आपको पता है, एंड जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यू जस्ट हैव टू चेक दैट आप कौन सा वाला रेशियो यूज कर सकते हो. Two poles of height 18 meters and 7 meters means you have that length of AB as 18 and CD as a 7, and AC is given as a 22 meters. We know that here obviously BDEC is a rectangle. It means that अगर CD रहता है आपका 7 मीटर का, then EB so of 7 मीटर. अगर ए बी आपका टोटल रहेगा 18 मीटर का एंड उसमें से ई बी है आपका 7 मीटर, देन ऑब्वियसली ए ई का वैल्यू आप कैसे बोल सकते हो, ए ई इज नथिंग बट 18 minus 7, right, which will be 11. So now just we'll talk about the right angle triangle AEC. We'll just talk about the right angle triangle AEC. जिस केस में आपको जिस मेजर ऑफ एंगल सी फाइंड आउट करना था, सी का अपोजिट साइड क्या है आपको पता है. उस केस में आपको हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू पता है. सो ओ एच ऐसा कुछ आपका रहता है, एंड हमने किया भी था ओ एच इज नथिंग बट साइन वाला केस, राइट, which is nothing but we have to use the sine method. So for this C, opposite side is nothing but A and this. So we can say that sine C equals to OH, that is opposite upon adjacent. So sine C will be 11 upon 22, which is nothing but sine C is given as 1/2. But साइन के रो में आपको 1/2 कब मिलता है, फॉर 30 डिग्री. वी नो दैट साइन 30 इज 1/2. सो वी कैन से दैट C equals to 30 degree. C equals to 30 degree. That is जो आपको फाइंड आउट करना था, एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल will be 30 degree.
It will be 30 degrees. If you want to take a screenshot, you can take. Okay. Bye bye.